students, this is Dr. Vibha Tiwari. Students, in my previous video, I had taken some of the paragraphs of the essay on going a journey. Today I'm going to proceed further. Let's have the text first. There is a feeling in the air, a tone in the color of a cloud which hits your fancy, but the effect of which you are unable to account for. See, in the previous lines that I had discussed in the last video, I had told you people that the writer says it is always better to go on a journey all alone, because if you are in the company of someone, you won't be able to enjoy liberty, you won't be able to enjoy freedom, because when you are in the company of someone, you will have to all the time try, you will be always trying to match your ideas or thought process to that of your fellow traveler rather, and it's a tedious task. Then you will lose all the interest in the journey. So continuing the same thing, the writer says that perhaps you have a more keen perception of the things. Perhaps you are able to feel the air, the color of you might be able to see a certain kind of color in the clouds, which you can experience, which you can enjoy. But if you are forced to give words to that feeling, it will be a very tedious job. You will immediately lose interest in that thing. That means he simply wants to say, so many times there are certain things which catch our fancy, but we don't have to explain it to someone. See, sometimes there are certain things, some natural beauties which attract us, and which you can say we feel comfortable just musing on them. Instead of giving words to that feeling, so if we are supposed to explain why we are attracted to a particular thing, perhaps you will lose interest in that thing also. There is then no sympathy, but an uneasy craving after it, and a dissatisfaction which pursues you on the way, and in the end probably produces ill humor. And when you are forced to do something, when you are forced to give words to your feelings, then you lose interest in that point of attraction. Similarly, you have that uneasiness growing inside you, and you get dissatisfied with your fellow traveler, and finally you get angry, or rather you are your mood becomes off, you are not in a good mood, and you don't want to continue a journey in the company of that person. So many times things attract us, but we don't want to give words to them. We don't want to explain that to anyone. And in case if you are forced to give an explanation to your feelings, naturally you will be dissatisfied and you will get angry from that person for whom you are forced to do that task. यानी हमारी जो कह सकते हैं ख्वाहिशें हैं, चाहते हैं, या हमें जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम अपने मन में महसूस करते हैं, उस चीज़ को हम लोग फील करते हैं. लेकिन अगर उस फीलिंग को हमें शब्दों में बयान करना पड़े तो शायद हमें वो चीज़ से हमारा जो आकर्षण है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जिसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन करना पड़े शायद हम उससे भी नाराज़ हो जाएं. तो राइटर का कहना है कि अक्सर ये होता है कि आपको एक हवा में एक अजीब सी चीज़ महसूस होती है, या बादलों में एक अलग सा रंग दिखाई पड़ता है जो आप अपने तक सीमित रखना चाहते हैं. आप चाहते हैं, आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, आप आकर्षित होते हैं उस चीज़ के प्रति, लेकिन आप उस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकते. और अगर आपको ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ता है तो उसी टाइम आप अपने साथी से भी नाराज़ होंगे, साथ ही जो चीज़ अभी तक आपको आकर्षक लग रही थी आप शायद उससे भी बेरुख हो जाएंगे, आप उसको भी एंजॉय करना छोड़ देंगे. और राइटर का ये भी कहना है कि आपके अंदर फिर ऐसे
स्थिति में कोई सहानुभूति नहीं पैदा होगी अपने साथी के लिए, अपने सहयात्री के लिए, बल्कि एक बेचैनी का अनुभव होगा, एक असंतोष का अनुभव होगा, और धीरे धीरे आपका मूड बिगड़ जाएगा। आप चाहेंगे, आप झगड़े के उस पे स्थिति पर आ जाएंगे और आप बिल्कुल उस साथी से मुक्ति पाना चाहेंगे। तो यानी कुल मिला के राइटर का कहने का मतलब ये है कि यात्रा हमेशा, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं वाकई में, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अकेले ही यात्रा पर जाएं। In general, a good thing spoils out of door prospects. It should be reserved for table talk. लैम, चार्ल्स लैम का बहुत फेमस कथन है कि अगर सामान्य तौर पर बात की जाए तो कोई भी बेहतरीन चीज़ अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो बाहर आप बदमज़ा हो जाएगी वो चीज़, आप उसका इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे। ऐसी चीज़ों को आपको टेबल पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए। यानी लैम सिंपली वॉन्ट्स टू से दैट देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ थिंग्स विच we really want to discuss with others, and at that time we don't want to be alone, we need company for discussions. And he says these topics, though the topics which you actually want to discuss, they should be discussed on a table, that means in a proper manner, by sitting around a table and being comfortable in the company, rather than going all alone outside. Is for this reason I take it the worst company in the world out of doors. And he says just because of this, whenever I have to move out, I simply prefer that kind of a person who is versed in giving company, that means with whom I do not need to share anything. So I'll be comfortable in the company of such a person, because then I won't be forced to discuss anything with that, because he is the best within. He gives you the reason also. He says if you go outside in the company of a person who is the worst companion for you, in that case you won't be forced to discuss anything with that person, because that fellow will be confined within himself, and you will also enjoy your solitariness, your loneliness, even when you are in company. I grant there is one subject on which it is pleasant to talk on a journey, and that is what one shall have for supper when we get to our inn at night. He says there is only one topic which I feel comfortable in discussing out of doors, and that is what we are going to have in the dinner. That means he says these petty issues should be discussed outside, when you are outside, without any, you can say, any serious matter of discussion. Then these are the things which can make you go on in your journey. Otherwise, indirectly he is also just you can say putting emphasis on what Hazlitt wants to say, that when you want to go on a journey, you should prefer to be all alone, because then only you will be able to enjoy nature. Lamb is giving, you can say, is raising the protocol of discussion. For him, if you need to discuss something, if a serious discussion is needed, it should be done in a proper manner by sitting around a table and doing it comfortably, rather than going outside with an uneasiness, because at that time you'll get distracted. So in order to emphasize his point, Hazlitt has raised this thing, has quoted Lamb, and he says Lamb has also said so. So that's why when you really want to enjoy liberation, when you really want to enjoy nature, then you should go all alone in the company of nature. यानी कि लैम्ब का ये कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी अच्छी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, तो बाहर जाते ही उस चीज़ का मज़ा ख़त्म हो जाएगा, उस चीज़ का जो सोल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना है, तो बेहतर है आप अपनी कंपनी के साथ, संगत के साथ रूम में बैठें, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को डिस्कस करें। आगे कहता है लैम्ब, आगे ये कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, यानी जो आपके लिए वर्स्ट कंपेनियन है, तो वो आपके लिए आउट ऑफ डोर बेहतरीन साथी साबित होगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे डिस्कस नहीं करेगा, वो अपने में सिमटा रहेगा और आप अपने में सिमटे रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप बाहर की चीज़ों को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। और राइटर का, लैम्ब का ये भी मानना है कि अगर बाहर यात्रा के दौरान आप किसी चीज़ को डिस्कस करना भी चाहते हैं, तो वो है खाना।
भोजन भोजन या इस तरह के तुच्छ विषय, इनके ऊपर आप ज़रूर डिस्कशन, आम जीवन के जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर आप ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं बाहर यात्रा के दौरान। कोई सीरियस डिस्कशंस आपको नहीं करने चाहिए, बिकॉज़ उस टाइम पर आप अपने ध्यान को बटा हुआ पाते हैं, नेचर की कंपनी में पाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई सीरियस डिस्कशन आपने नहीं करना चाहिए। और हाज़लिट ने इस चीज़ को अपने पॉइंट को पुख्ता करने के लिए जोड़ा है, क्योंकि उनका भी यही मानना है कि अगर आप कोई चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अकेले यात्रा पर जाएं। I associate nothing with my traveling companion but present objects and passing events. In his ignorance of me and my affairs, I, in a manner, forget myself. Now, this gives you a very clear-cut insight of what kind of a person Hazlitt is or Hazlitt was. He says, when I go on traveling in the company of someone, I do not want to associate anything with that person. I only associate what is happening in the present. Now, these lines are, you can say, in a way philosophical also. Even Gita also preached in Hindu mythology, the scripture Gita also preaches us that one should focus on present only instead of worrying about the past or worrying about future. One should live in present. So he says, during the course of journey, Hazlitt says, during the course of journey, I do not want to associate anything else with that fellow traveler, rather only the present objects and present things. He says the ignorance of the fellow traveler is a bliss for him, because that gives him a chance to forget his own self. But a friend reminds one of other things, rips up old grievances and destroys the abstraction of the scene. He says if you are in the company of a friend, naturally he will initiate that kind of discussion which will further give you, you can say, a chance to ponder upon bygone time or just worry about future, and thereby your sole purpose of going on the journey, that means freedom, that will get quashed, that will get destroyed. So it is better always to go on a journey in the company of someone who is a stranger instead of that person who knows you, because when someone who doesn't know you goes along with you, you won't be disturbed, whereas a friend will have all the power to disturb you because he knows you inside out. यानी राइटर का कहना है कि मैं अपने साथी यात्री के साथ कोई भी चीज़ नहीं जोड़ना चाहूँगा, सिर्फ जो वर्तमान समय जिस वक्त मैं यात्रा कर रहा हूँ उस वक्त मेरे आसपास जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है या जो सामान है उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बारे में और मेरे अफेयर्स के बारे में, यानी मेरे कार्यवाहियों के बारे में जो मेरा साथी है वो इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, उसको नहीं पता, मेरा उसके साथ इतना जुड़ाव नहीं है, ऐसी स्थिति में वो मुझे परेशान नहीं कर पाएगा, वो अपने में मुझे बार बार अपने अतीत की या भविष्य की चिंताओं में नहीं डाल पाएगा और मैं अपनी यात्रा को एंजॉय कर पाऊँगा। इसकी बजाय अगर मेरे साथ मेरा कोई दोस्त है जिसके साथ मैं यात्रा कर रहा हूँ, तो बार बार वो दोस्त मुझे मेरे गुजरे हुए वक्त या आने वाले वक्त के बारे में जोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि देखो दोस्त जो होते हैं वो हमें अच्छी तरह से, बेहतरीन तरीके से हमारे गुजरे हुए वक्त को, हमारे वर्तमान को अच्छे से जानते हैं। तो जाहिर बात है कि ऐसे व्यक्ति की कंपनी में आप अपने आप को डिसोशिएट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को इन चीज़ों से अलग थलग नहीं कर पाएंगे, और जब आप चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो आप यात्रा को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यानी आपका यात्रा पर जाना तभी सफल हो सकता है जब या तो आप बिना किसी कंपनी के हों या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में जाएं जो आपको अच्छे से न जानता हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही आप अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर लगा पाएंगे। He comes in ungraciously between us and our imaginary character. Now, in these lines, the writer gives you the reason why he does not want to go in the company of a friend. He says the friend will ungraciously come between us and our imaginary character. That means in the course of our journey, naturally we will be just weaving certain kinds of fancies in our mind,
And the friend, because he'll continuously nag you, bring you to the present, bring you to the old memories of the past, so he'll be spoiling your you can say whole fun of going on a journey. Something is dropped in the course of conversation that gives you a hint of your profession and pursuits. See, in the very beginning, I told you people that naturally we go on a journey because we are so much fed up of our daily routine life that we want to dissociate ourselves for a particular time period. And if you are in the company of friend, naturally you will be again and again dragged to the same profession and the memories of the same profession and the likings and dislikings. Or from having someone with you that knows the less sublime portions of your history, it seems that other people do. If you are in the company of someone who knows you inside out, naturally that person knows your past also. And then your whole, you can say, life, the achievements and your failures of your life are known to that person. So naturally, if that person is in your company, you will all the time be just busy in trying to balance between the failures and the achievements. Somehow you will get distracted because that fellow will continuously give you a kind of feeling that he knows the less important parts of your life. So you will always be busy in the thought process of your own life. You are no longer a citizen of the world, but your unhoused free condition is put into circumspection and confined. And as you know that when you are going on a journey, you want to liberate yourself from the ties, but your friend will again and again bind you to those shackles. So you will not be able to enjoy the status of a citizen of the world. That means you won't be able to enjoy the status of one who doesn't have any association with anyone. And your unhoused condition, that means your liberated condition, you who was thinking of being a free bird, you will be put into circumspection and confined. Your all the time your actions will be you can say the point will become the point of discussion, naturally, because your friend knows you very well. So somehow after one or two things, naturally he will come to the topic of your life, and the liberty, the freedom that you will enjoy up till now, that will get destroyed, and you will feel choked in the company of such a person. सो द राइटर सेज कि अगर आप किसी जानकार के साथ सफ़र पे जाते हैं तो वो जो आपका जो फ्रीडम रहता है सोचने का, वो ख़त्म हो जाएगा. वो बार बार वो दोस्त आपका और आपके कल्पना लोक के बीच में आके खड़ा हो जाएगा, या बातचीत के दौरान कुछ ना कुछ ऐसी बात उसके मुंह से निकल जाएगी जिससे आप अपने आप को वापस अपने प्रोफेशन से, अपनी इच्छाओं से जुड़ा हुआ पाएंगे. जिनसे छुटकारा पाने के लिए आप यात्रा पर गए थे, उन्हीं चीज़ों में बार बार आपको फंसना पड़ेगा, बार बार खींच कर लाया जाता रहेगा आपको. और क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के गुज़रे हुए पन्नों को भी बहुत अच्छे से जानता है, इतिहास को भी बहुत अच्छे से जानता है, तो आप जो अब तक अपने आप को बिल्कुल फ्री बर्ड समझ रहे थे, मुक्त समझ रहे थे, आज़ाद समझ रहे थे, वो आपकी स्थिति ख़त्म हो जाएगी. क्योंकि बार बार आपको वो यादों के पिटारे को खोल कर खींच कर उन बातों को सामने लेकर आएगा, जिसकी वजह से जो आपकी आज़ादी थी वो ख़त्म हो जाएगी और बार बार आपको सोच विचार में पड़ना पड़ेगा. तो कहीं ना कहीं आपका सारा जो इंटरेस्ट है यात्रा पर आने का, वो ख़त्म हो जाएगा. There is hardly anything that shows the short-sightedness or capriciousness of the imagination more than traveling does. With change of place, we change our ideas. He says it's a very great thing associated with the journey, that one gets to know of one's short-sightedness or the momentariness of imagination. Because with the change of place, we change our ideas, nay, our opinions and feelings. Because in the course of our journey, when we visit different places, all the time when we visit a particular place, we associate ourselves to that immediately. The moment we change our destination, immediately those feelings are destroyed and we try to make new associations with the new place. We can
by an effort indeed transport ourselves to old and long forgotten scenes, and then the picture of the mind revives again, but we forget those that we have just left. See, mind is a very complicated thing. It's a very you can say strange thing. The strangeness lies in the fact that it so often happens that those things which happen in our lives in the present moment, we tend to forget them the next moment, whereas those things which occurred to us or which happened in our lives way back years ago, we remember them as if they happened just now. This is the strange behavior of the mind. This is the you can say, even we can call it the beauty of mind. We tend to forget the present, but we correlate ourselves with the past. So he says during the course of journey this fact is highlighted even more. यानी कि यात्रा पर जाने के दौरान सबसे ज़्यादा हमें अपने जिसको कह सकते हैं नज़रिए की छोटेपन का एहसास होता है, क्योंकि यात्रा के दौरान हम जो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो जैसे ही एक जगह से हम दूसरी जगह पर जाते हैं तो पिछली जगह की यादें तुरंत ख़त्म हो जाती हैं। जबकि दिमाग की बात करते हुए राइटर कहता है कि दिमाग बड़ा खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि इसके पास पावर रहती है। हम जो चीज़ अभी अभी हमारे साथ घटित हुई है उसको तो हम भुला देते हैं, लेकिन बरसों पहले जो चीज़ें हमारे साथ हुई रहती हैं वो हमारी यादों में ऐसी रची बसी रहती हैं मानो अभी कल ही हुआ हो। यानी ये दिमाग के अंदर ही क्वालिटी है कि हमें आज की चीज़ें भूल जाती हैं और गुज़रे हुए वक्त की बहुत पुरानी पुरानी बचपन की बातें भी हमें आज भी ऐसी की ऐसी याद रहती हैं। तो ये भी यात्रा का ही एक कह सकते हैं ब्यूटी है कि माइंड जो है वो अभी अभी जो चीज़ें घटित हुई हैं यात्रा के दौरान उनको भुलाने की पावर रखता है, लेकिन गुज़री हुई वक्त में जो बहुत समय पहले जो घटनाएं हुई हैं उनको वैसे का वैसा ही याद रहता है। और ये बात हमें बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी यात्रा के दौरान महसूस होती है।